इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, हेल्थ, हेल्थ कर रहे थे हम। हेल्थ में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 3 tier सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 layers, 3 levels, 3 tier system: primary, secondary, tertiary. It has got nothing to do with the sectors, primary sector, tertiary. No, these are 3 levels of health infrastructure. प्राइमरी हेल्थ केयर, क्या क्या इंक्लूडेड है प्राइमरी हेल्थ केयर? तो PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स एजुकेशन concerning prevailing health problems and methods of identifying, preventing, and controlling them. Promotion of food supply and proper nutrition and adequate supply of water and basic sanitation. ये भी हेल्थ में आता है. Maternal and child health care, immunization against major infectious diseases and injuries, promotion of mental health and provision of essential drugs. Primary health care, इसमें क्या क्या included है? Education, education relating what? Education concerning prevailing health problems, अभी क्या क्या problems चल रही है, methods of identifying, कैसे पता चलेगा किसी को वो problem है कि नहीं है, preventing and controlling them, promotion of food supply and proper nutrition and adequate supply of water and basic sanitation, maternal and child health care, immunization against major infectious diseases and injuries. Immunization कैसे होगी? Vaccines के through. Promotion of mental health and provision of essential drugs. In order to provide primary health care, primary health centers, community health centers, and sub-centers have been set up in villages. Primary health care कौन-कौन provide कर सकता है? PHCs, primary health centers, CHCs, community health centers, and sub-centers. So village set up in villages and small towns. They are generally manned by a single doctor, a nurse, and limited quantity of medicines. When the condition of a patient is not managed by such centers, they are referred to secondary or tertiary hospitals depending on the severity of the case. Basic level पे, village level पे, small towns में PHCs होते हैं, primary health centers, CHCs, community health centers, and sub centers. वहां पे एक डॉक्टर, एक नर्स और लिमिटेड मेडिसिन. अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा नर्स नहीं हो सकती, बट पॉइंट विच दे वांट टू मेक इज वन डॉक्टर इज द हेड ऑफ द एंटायर सेंटर. वहां कोई स्टाफ नहीं है लंबा चौड़ा, सिंगल डॉक्टर. उनके नीचे एम्प्लॉइज हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं होते. पॉइंट ये बता रहे कि ना ज्यादा वहां फैसिलिटीज हैं, ना ज्यादा मेडिसिन है, ना ज्यादा मैन पावर है, बट हर जगह हो नहीं सकता ना, तो एटलीस्ट वहां पे कुछ समथिंग इज बेटर देन नथिंग है, बस और कुछ नहीं. प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या इंक्लूड करता है? फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल सेकेंडरी हेल्थ केयर. सेकेंड लेवल हॉस्पिटल्स विच हैव बेटर फैसिलिटीज. बेटर is a relative term, so they are comparing with the primary health centers, CHCs, community health centers, and sub centers. उनसे better है. Hospitals which have better facilities for surgery, electrocardiogram, ECG are called secondary health care institutions. They provide primary health care and also better healthcare facilities. तो जो primary healthcare है वो तो ये provide करते ही करते हैं, थोड़ी सी advanced machineries होती हैं इनके पास, तो उनसे थोड़ी better healthcare facilities provide करते हैं. They are mostly located in district headquarters and in big towns. Secondary healthcare, तो जो facilities primary healthcare की हैं वो तो है ही हैं, but some better facilities for surgery, ECG, वो सब भी होता है. Topmost tertiary healthcare.
Hospitals which have advanced level equipment and medicines and undertake all the complicated health problems which could not be managed by primary and secondary hospitals come under tertiary healthcare. The tertiary sector also includes many premier institutes which not only impart quality medical education and conduct research but also provide specialized healthcare. For example, AIMS in Delhi. Three-tier system of health infrastructure: primary health care, secondary health care, tertiary health care. Primary health care, villages and small towns. कौन provide कर रहा है? PHCs, primary health centers, CHCs, community health centers, and sub centers, third sub centers, village level, small towns. फिर secondary healthcare कहाँ? District headquarters and big towns. तो जो सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो है ही है. इन एडिशन सम बेटर फैसिलिटीज फॉर सर्जरी, ECG एटसेट्रा. टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो है टर्शरी हेल्थ केयर. वो टर्शरी हेल्थ केयर के अंडर आते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पे एडवांस लेवल इक्विपमेंट है, मेडिसिन है and facilities to undertake all the complicated health problems which could not be managed by primary and secondary hospitals. तो क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप गए, वहां पे आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती. कोई भी मतलब अगर तो ना कि जो प्रॉब्लम है वहां पे वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, जो मेडिसिन चाहिए वहां नहीं है, जो मशीन चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो नहीं है वहां पे. तो वो रेफर कर देते हैं कि नहीं, आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए. तो सेकेंडरी अगर आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है तो आप सेकेंडरी चाहिए, नहीं तो फिर आप बड़े हॉस्पिटल में टर्शरी हेल्थ. तो डिपेंडिंग ऑन द केस विलेजेस में फिर ऐसे रेफर कर दिया जाता है. यहाँ पे तो सब मोस्टली ट्रीटमेंट के लिए टर्शरी में ही जाएंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इलनेस. ओके, तो थ्री टेयर सिस्टम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थ्री टेयर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन. नेक्स्ट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब इनिशियली द रोल फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाज गिवन टू द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, बट ड्यू टू देयर inadequacies, due to their inefficiencies, the private sector realized the importance of their participation, their role. So private sector plays a very 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 important role in development of infrastructure. Role of private sector in the recent times, role of private sector in providing health services has considerably grown. More than 70% of the hospitals in India are run by the private sector, which is sad because they will charge accordingly. But जो भी है, अगर हम भी बीमार होंगे तो हमें डर लगेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने में कि पता नहीं वहां हमारी ट्रीटमेंट ठीक से होगी भी कि नहीं होगी. Private sector control nearly 2/5 of the beds available in the hospitals. Nearly 60% of dispensaries are run by the private sector. Private sector provides healthcare to 80% of outpatients and 46% inpatients. Outpatients मतलब जो आए कंसल्टेशन के लिए, मेडिसिन ली, चले गए. OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ना, OPD. तो OPD क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. कि आपको कोई बेड थोड़ी ना चाहिए, आपने हॉस्पिटल में एडमिशन थोड़ी ना लेना है ट्रीटमेंट के लिए. आप आए, डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन ली और चले गए. OPD. IPD, इनपेशेंट्स, तो आपने एडमिशन ले रखा है, आपको रूम अलॉट हो रखा है, बेड अलॉट हो रखा है और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है. Private sector provides healthcare to 80% of outpatients and 46% of inpatients. Private sector plays a dominant role. Private sector plays a dominant role in medical education and training, medical technology and diagnostics, manufacture and sale of pharmaceuticals, hospital construction and provision of medical services,
private sector plays a dominant role in all these sectors. In 2001-2, there were more than 13 lakh medical enterprises employing 22 lakh people. Many NRIs and industrial and pharmaceutical companies have set up super specialty hospitals to attract India's rich and medical tools. However, private sector in India has grown independently without any major regulation. Some private practitioners are not even registered doctors and are known as quacks. मतलब वो डॉक्टर्स भी नहीं हैं. Private sector in India has grown independently without any regulation. कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, चेक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. कितनी बार केसेस आते हैं कि लोग क्लिनिक्स चला रहे हैं और वो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं हैं. अब हम कोई जब चेकअप कराने जाते हैं तो चलो पहले डिग्री दिखाओ अपनी, भरोसा ही होता है ना. So some private practitioners are not even registered doctors and are known as quacks. People who are making fool of the public. The role of government in providing healthcare is still very important, as poor people can depend only on government hospitals due to huge expenses in private health services. तो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन तो हेल्थ में बहुत ज्यादा है. कंट्रीब्यूशन इन द सेंस दे प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. नंबर्स बता रहे हैं 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर. 70%. 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में बेड्स हैं, काफी हैं, बट 2/5 40% बेड्स प्राइवेट सेक्टर. नंबर्स बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के फेवर में कि मेजरली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है. तो उसका ड्रॉबैक क्या है? गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा. तो क्या होगा कि अगर वो क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कहाँ जाएंगे? दे कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो द गवर्नमेंट हैज टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स. The role of government in providing healthcare is still very. कह रहे ठीक है, आपने तो बोले प्राइवेट सेक्टर देख रहा है सब. अरे प्राइवेट सेक्टर अगर सर्विसेज अच्छी ऑफर करेगा, एडवांस इक्विपमेंट्स होंगे, फैसिलिटीज होंगी, तो चार्जेस तो उस हिसाब से ज्यादा ही होंगे ना. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दीज ट्रीटमेंट्स. तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता कि फिर कहाँ जाएंगे. तो गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दे आल्सो प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज. कितने सारे तो गवर्नमेंट के मतलब मिनिस्टर्स जब बीमार होते हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते. वो बहुत मतलब सुन के डर लगता है कि यार ये लोग नहीं, इनकी ट्रीटमेंट तो फिर भी मतलब हमें लगता है ना कि गवर्नमेंट जैसे एम्स है, एम्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वहां तो आपको जाना ही मतलब ट्रीटमेंट होना बड़ा मुश्किल है. बट अदरवाइज भी वहां भीड़ इतनी होती है कि डर लगता है कि इतने सारे लोगों में स्पेशली कोविड की ट्रीटमेंट तो एक अलग ही लेवल का डर होता है. लेकिन एज अ मिनिस्टर तो आपको तो मतलब अगर आप प्रमोट करना चाहते हो कि हमारी कंट्री की फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो इम्प्रूव हो रही हैं, तो आपकी ट्रीटमेंट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होनी चाहिए. आप भी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो मतलब आपको खुद ही भरोसा नहीं है जो गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रही हैं, व्हिच इज सैड. बट एम्स इज एन एक्सेप्शन कि वो तो एक अलग ही लेवल का है, मतलब वहाँ बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है. बट एम्स ही है दिल्ली में, तो बाकी सारों में तो डर ही लगता है नाम सुन के भी. एनीवे, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है. Community and non-profit organizations in healthcare. One of the important aspects of a good healthcare system is community participation. It functions with the idea that people can be trained and involved in primary healthcare system. For example, NGOs like Seva in Ahmedabad and Accord in Nilgiris are working in India. NGOs like Seva, Accord, तो कह रहे प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है, गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही है, उसके अलावा भी कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस
भी हेल्थ सेंटर्स चला रहे हैं. Trade unions have built alternative healthcare services for their members to give low cost and rational care to people from nearby villages. For example, Shahid Hospital, built in 1983, is maintained by workers of Chhattisgarh Mines, Shramik Sangh in Durg, Madhya Pradesh. Trade unions, फैक्ट्रीज में वर्कर्स की होती हैं, they have built alternative healthcare services for their members to give low cost rational care to people from nearby villages. For example, Shaheed Hospital, built in 1983, is maintained by the workers of Chhattisgarh Mines, Shramik Sangh in Durg. So ये यूनियन का नाम है, छत्तीसगढ़ में एक ग्रुप है, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ. संघ मीन्स अ ग्रुप. Madhya Pradesh. Some rural organizations like Kashtkari Sangathan in Thane, Maharashtra, have also made attempts to build alternative healthcare initiatives. Rural organizations. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का तो है ही है रोल, प्राइवेट सेक्टर का कहीं ज्यादा है, उसके अलावा कम्युनिटी एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो डूइंग देयर बिट. उन्होंने भी, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेवा एंड अकॉर्ड. सेवा इन अहमदाबाद, अकॉर्ड इन नीलगिरीज. मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, कितने सारे, मतलब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो अफगानी तो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलते हैं, बट है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया बहुत फेमस है. हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया कंबाइन लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजीज विद क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. Moreover, health services are cheaper in India as compared to cost of similar healthcare services in other countries. Health services are cheaper in India. Therefore, people from many countries, they prefer to travel India for their medical treatment. As a result, foreigners come to India for surgeries, liver transplants, dental, and even cosmetic care. In 2016, around 201,000 foreigners visited India for medical treatment, and by 2020, India could earn more than 500 billion rupees through such medical tourism. However, India needs to upgrade its health infrastructure to attract more foreigners to India. तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया का काफी ज्यादा फेमस है. वाई? चीपर पड़ता है इंडिया में. अच्छी, ये नहीं कि मतलब दे कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सर्विसेज, सर्विसेज भी अच्छी हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, चीपर भी है. फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट्स, डेंटल एंड इवन कॉस्मेटिक केयर. In 2016, around 201,000 foreigners visited India for medical treatment. Just a data, 2016. And by 2020, India could earn more than 500 billion rupees through medical tourism. Star conditions apply. COVID में सारा travel बंद, but still. इतना read करेंगे पहले.